अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं चैप्टर 4 के एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी स्टैटिस्टिक्स के। जिस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ में सॉल्व करती हूँ उस बुक का नाम है एम्पोरियम एमसीक्यूज़ स्टैटिस्टिक्स, सो यू कैन ईजीली बाय। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं इस बुक का नेम क्या है, तो मैंने आज फिर से बता दिया इस बुक का नेम। सो नाउ आज हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन। So now let's get started, but before starting I want to remind you that if you like my videos, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Okay, so now here we are having number 1 MCQ is in a symmetrical distribution mean, median and mode is coincide. Number 2 MCQ is the second movement about mean is standard deviation, C option. The AM is greater than mod is equal to positively. Number 4 MCQ is there is frequency distribution mean is mean, median, mode is called as positively. इसको भी हम बोलते हैं range of 5 5 5 5 5 5 5 5 की रेंज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं MCQs में। Now we have number 6 MCQ, that is which is the poor measure of dispersion in open end distribution, so C range. Number 7th MCQ is the degree to which numerical data tend to spread about an average value is number D option dispersion. If y is equal to bx plus c, the range of y is quartile of x. Number 9th MCQ is if y is equal to bx plus a, the mean deviation of y is md of x. Now number 10th MCQ is if y is equal to ax plus b, the standard deviation of y is standard deviation of x. 11th MCQ is absolute sum of deviations is minimum from dash from mean. The lack of uniformity is called skewness. MCQ number 13 is relative measure of skewness was introduced by relative measure किसने introduce किया था, कार्ल पेयरसन मेयर, C option. Number 14 is second movement about mean is always equal to variance. In grouped data the range is different, the range is the difference between two extreme classes boundaries. Number 16th MCQ is the measure of relative dispersion is called as coefficient of quartile and deviation. Coefficient of quartile deviation. Number 17th MCQ is mean deviation is equal to 4 by 5 of the dash manipulation, standard deviation manipulation, C option. Number 18 is quartile deviation is not capable of manipulation dash algebraic. Now MCQ number 19, sorry. The correct variance is defined as the dash variance of data h2 upon h1 1 2. Okay, that means the correct option is D. The variance of 4 4 4 4 or 4 is none of these because -4 का भी नहीं होगा, 4 स्क्वायर का भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन है ही नहीं इसमें। Mean deviation is always less than standard deviation. In symmetrical distribution, the coefficient of skewness is equal to 0. I hope so आपको नजर आया होगा MCQ. Now number 23rd MCQ is the standard deviation are dash of origin independent of origin. ठीक है, the standard deviation variance are dash of origin. तो ये आगे का भी एक MCQ है जिसमें I am a bit confused कि क्या होगा, बट यहाँ पर हमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, ठीक है, और स्केल पर होता है कि नहीं, ये हमारे पास आगे वाला MCQs है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। Number 24th MCQ is dash of distribution which is measured relative to the distribution is known as normal flatness of the distribution, means option number B. 25th MCQ is the dash in the distribution around which the observations tend to lie manner. Now we have MCQ number 26, which is the most repeated MCQ, that is check the consistency used, coefficient of variation, means option number C. Number 27 is the standard deviation is affected by the value of every dash observation,
The value of interval x plus minus s includes 68.27%. Okay, so now 29th MCQ is first movement about mean is always equal to 0. 30th MCQ is first movement about origin is always equal to 0. Now 31st MCQ is dash is the simplest means of dispersion, range is the simplest mean. Okay, now number 32 MCQ is the sum of odd powers of deviation from mean is 0 is called normal. 33 MCQ question. 33 MCQ is, I hope you can see it, yes. If variance is standard deviation is minimum, if the deviations taken from mean, if square distribution, the three averages, mean, median and mode are different. If third movement about mean is equal to 0, then distribution is symmetrical. 36th MCQ is the sum of absolute deviations from mean is least. The sum of squares of deviation is the least when measured from AM. Number 38, mean deviation is equal to dash standard deviation 4/5 standard deviation. Number 39th MCQ is the shape of the symmetrical distribution is bell-shaped. 40th MCQ is standard deviation is always calculated from standard deviation हम हमेशा mean से ही calculate करते हैं, so option A is correct. Number 41 is if the values are same, then the measure of dispersion will be 0. Suppose for 40 observations the variance is 50. If the observations are increased by 20, the variation of these increased observation will be 50. Variance remains unchanged by change of. ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वेरिएंस जो होता है वो अनचेंज्ड होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल दोनों के, या किसी के भी नहीं, या ओरिजिन के सिर्फ या स्केल के सिर्फ. तो मैंने इसमें देखा है बहुत सी जगहों पर, इस बुक में तो हमारे पास बोला गया है ए ऑप्शन है, बट मैंने यहाँ पर नेट्स वगैरह से भी देखा है तो उसमें कभी ए बता रहे हैं, कभी बी बता रहे हैं और कभी सी बता रहे हैं. तो इस MCQ का आंसर अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट लेटर ऑन जब मुझे दूसरी वीडियोस में आपको बता दूं कि जब मुझे ये आंसर कंफर्म हो जाएगा. अगर आप में से किसी को इसका आंसर कंफर्म है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. So now 44th MCQ is if y is equal to minus at x minus 5 and standard deviation of x is 3, then standard deviation of y is 24. Now 45th MCQ is okay. If the standard deviation of values 2, 4, 6, 8 is 2.33, then the standard deviation of the values 4, 6, 8, 10 is 2.58. The variance of 5 numbers is 10. If each number is divided by 2, then the variance of new number is 2.5. The percentage of values lies between x plus 2st is 95.45. Lowest value of variance can be 0. Mean deviation, variance and standard deviation of the values 4, 4, 4, 4, 4, 4 is 0. The mean deviation of the values 18, 12, 15 is D ऑप्शन नंबर 2. अगर आप लोगों को मतलब कि इसके मेरे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं इस बुक में, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और उसके अलावा जो यहाँ पर मीन, मॉड और ये सब कुछ जो भी कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की एंड ऑल दैट, so I'll be discussing these type of calculation in my coming videos. Like I'm making those videos right now and will upload it later. So thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.